Assalamu alaikum everybody, and thank you so much for the lovely introduction. My name is Dr. Sana Adeel. I am a consultant dermatologist and aesthetic physician practicing for the past 13 years in Karachi. Today we will be discussing about the new thing in aesthetics and dentistry also, which is known as exosomes. Next please. Next slide. Next. These are my credentials. Next slide please. Now, first of all, कौन सा वाला ये आगे के लिए हो रहा है यूज़? ठीक है, previous. मैं next बोलूँगी तो कर देना. अच्छा, before moving on to exosomes, I think mostly all of you are dentists. तो थोड़ा सा स्किन के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. स्किन बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी and it is composed of 3 layers. The outermost layer is the epidermis, which is basically made up of keratinocytes. It also has melanocytes जो melanin produce करते हैं, जो हमारे स्किन को कलर इम्पार्ट करता है, and Langerhans cells जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है. The second layer is the dermis, जो basically extracellular matrix और connective tissues से made up है. So it contains collagen and elastin fibers which are made by fibroblasts, और वो elasticity और strength देता है to our skin. जो third और most important layer है, which is the subcutaneous tissue, that basically has the adipocytes, the mesenchymal stem cells and the blood vessels. जो skin की homeostasis है, that it is due to the interaction of all these 3 layers and all these 3 components. कोई भी wound हो, कोई immune mediated disease हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है और जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब होती है, और उसके बाद स्किन में चेंजेस देखे जाते हैं जो स्किन को वीक करते हैं. एक्सोसोम्स इज़ अ न्यू एरा नाउ इन एस्थेटिक्स एंड इन डेंटिस्ट्री, जो कि आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करोगे. It is basically, it really helps in the intercellular communication with each other. Now let's see what are exosomes. Exosomes are basically extracellular vesicles which contain DNA, RNA, proteins, lipids, amino acids and metabolites. The 2 main RNAs that are responsible for carrying out most of the functions are the mRNA and miRNA, microRNAs. Now exosomes are found in all body fluids and it is produced by all cells of the body, but वो आहिस्ता आहिस्ता with age they decline and उनके function में delays आ जाते हैं. Exosomes are important in cell to cell communication, tissue repair, immune system modulation, and it also has anti-inflammatory properties. Next. Now regarding the biomarkers, exosomes contain many groups of excellent proteins जो हमारे बॉडी के सेल्स के हर चीज़ को रेगुलेट करता है. एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, दोनों तरफ सारे मैकेनिज्म्स जो हमारी बॉडी को चलाते हैं वो सब लिखे हुए हैं. सो आई विल जस्ट, जो हमें मोस्ट ज़्यादा ज़रूरत होता है फॉर इन स्किन, वी नीड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स, एंजियोजेनेसिस एंड वोन हीलिंग जो कि ज़रूरी होता है टू मेक न्यू सेल्स, कोलेजन एंड इलास्टिन. एपोप्टोसिस को इनहिबिट करना है हमने, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन एंड न्यूप्लेसिया में भी हेल्प करता है. सेल माइग्रेशन एंड मेटास्टेटिक डिजीज़ में इसको यूटिलाइज करते हैं हम टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टू डिक्रीज द सेल्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन नियोप्लाज्म और ट्यूमर्स. नेक्स्ट. Okay, now exosomes are classified, basic classification is natural or engineered. Natural means जो कि animal या plant derived है, और engineered जो labs में artificially cultured किया जाता है. जो most important हमारे skin में वे use जो sources हैं, those are epidermal stem cells, mesenchymal stem cells जो मैंने आपको बताया था subcutaneous tissue में होता है, and adipose derived mesenchymal stem cells.
Next. Now this is a summarized mechanism of how exosomes act on the cells of the recipient cells. उसकी न्यूक्लिक एसिड उनकी प्रोटीन्स को किस तरह से रीजेनरेट करता है, कैसे उनको रीमॉडलिंग करता है to create a new skin and help in anti-aging and healing and wound repair. These are all the sources on both the sides जिनसे हम exosomes derive करते हैं, लेकिन we don't use all of them as such क्योंकि there are many ethical dilemmas and everything in Pakistan is already delayed and हमारे CDC के issues हैं, FDA approval के issues हैं, तो अभी all of ये sources हम utilize नहीं करते. ज़्यादातर we keep ourselves onto the plant derived exosomes or the engineered or cultured exosomes. Now, storing ways. अब हमारे पास पेशेंट्स हर वक्त आ रहे होते हैं, कोई टाइम नहीं होता, कोई कहता है हमें कल कर दें, कोई कहता है हमें 1 महीने के बाद का कर दें. सो हाउ टू स्टोर एक्सोसोम्स. एक्सोसोम्स में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो तो डीनेचर हो जाएगा, उसकी तो ख़त्म हो जाएगी एफिकेसी. सो हमारे पास देयर आर 3 ways that we can store them. Cryopreservation is the most common, in which we reduce the temperature so no biochemical reaction can take place, hence maintaining the stability of biological particles. ये most common होता है, liquid nitrogen के साथ भी किया जाता है, other processes से भी होता है, but इसका एक थोड़ा सा side effect होता है which is cryo destruction. ठीक है, so we add cryoprotectants, so उससे काफ़ी अच्छी stability आ जाती है. Freeze drying है, it cools materials containing moisture in advance and freezes it to a solid. And then spray drying, this is also very economical, लेकिन इसके अपने pros and cons हैं जो कि हम clinical based we don't prefer it as such. अच्छा, 2 तरह से preserve होता है, एक short term and एक long term. Short term में we keep the temperature between 4 and 20 degrees centigrade, and जब हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हम -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टोरेज कर सकते हैं. Whichever the storing way, what we have to take care is कि जो सेल की इंटेग्रिटी है, उसकी वायबिलिटी है, उसके जो कंटेंट्स हैं वो प्रिजर्व्ड रहें. They should not be damaged once we introduce it into the recipient's skin. Next. Okay. ये एक नया थेरेप्यूटिक एरा है जिसमें सिर्फ स्किन पे हम नहीं यूज़ करें स्टेम सेल्स. बेसिकली क्या है, एक्सोसोम स्टेम सेल से निकलते हैं. स्टेम सेल्स आप लोगों को पता है आजकल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, इन एवरी पॉसिबल डिजीज़ दैट वी कैन थिंक ऑफ. आजकल वैसे सबसे ज़्यादा तो स्किन और ऑर्थो में हो रहा है, बट अगेन दीज आर सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिनमें they have been studies are going on, research is going on, and they have given a very positive results up till now. Skin disorders में भी जो autoimmune conditions हैं उनमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. आजकल जो हम यूज़ करें that's basically in vitiligo, जो white skin patches होते हैं, that's an autoimmune disorder. Alopecia, which is generalized hair loss due to any factor. Anti-aging, scar revision, जो after wound healing it does occur, and then skin rejuvenation. Now these are some exosomes जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं. These are all imported locally. अब शुरू हुए हैं कुछ companies बनाना, and studies are still going on. But बाहर के इन सब के ऊपर we have studies. So we usually import them. That is why it is an expensive procedure. This is again another company, Exovex, which has very good exosomes. All these pictures have been taken after permission from the respective companies. Now let's come to skin aging. In facial rejuvenation,
इट इज़ गेनिंग, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है आजकल. एजिंग की बात हो रही है, एंटी एजिंग थेरेपीज़. होता क्या है इस पर? व्हाट हैपन्स एज वी एज? देर आर मैनी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. एक तो डिजीज़ होती हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है. व्हाट डू? They cause loss of epidermal and dermal thickness, deepening of rhytides, pore enlargement, dyspigmentation, and diminished soft tissue elasticity. That also leads to loss of aging of vitally important cells that are keratinocytes, fibroblasts, and melanocytes. Ultimately, when this occurs, there is decreased organization and production of collagen, elastin, and proteoglycans, which basically give the tensile strength, youthful look, and maintain the hydration of the skin. Ultraviolet rays exposure also damage the skin due to ultraviolet rays. Next. Now I will just be going through all the studies which have produced, which has given synergistic results in combination with other treatments. Very famous study, sure enough, they gave evidence about combining topical exosomes with microneedling, which provided greater skin quality, tone, texture, vascularity, and clarity, and improved sense of satisfaction among all the clients, as compared to microneedling alone. Now, microneedling can be done not only with a simple doctor pen device. Microneedling means any system that makes multiple punctures in the skin. Now, that can be through laser thing, yeah, other microneedling devices such as RF. Duncan proposed that topical exosomes after energy-based devices, that is lasers, showed faster recovery and fewer side effects as compared to using laser devices alone. Coe et al. Studied the effects of exosomes on hyperpigmentation, and it really helped to reduce if continued with repeated sessions of exosomes. Next. इससे नहीं हो रहा है. Here you can see the results. These are of patients who we have done these patients with Exovex and ACSC exosomes. You can see the overall improvement and a little bit of toning of the muscles and shortening of the face. Next. This looks more of an anti-aging picture. You can see the reduction of the fine lines and wrinkles. Here, no Botox has been used, but otherwise, these are the indications for Botox. Next. This is after 2 sessions of exosome therapy, and inshallah, in another 2 or 3 sessions, she will have a complete, beautiful, acne-free skin without any scar formation. Next. Not only skin means every organ, every part of the body. So it is not only restricted to the hair or the facial skin. We can use exosomes on almost all parts of the body. So whoever has such hands can also have a filling effect except fillers. अभी तक हम fillers से ही कर रहे थे, but now this is a new era. We are experimenting. And still you can see a lot of improvement in the post-procedure hand. Next. Now, hair growth is basically a combination of many processes in the skin. Hair loss or hair thinning is mainly under genetic, hormonal, and external factors mediated, which basically nowadays includes the chemical treatments like keratin, etc., and coloring, which is again chemical, and use of all the shampoos that have such a sweet smell and all the colored chemicals that it has. Now again, I'll just give you a brief about the studies that have been done. They all studied that adipose derived stem cell exosomes
basically mediated dermal papillae cells and caused its proliferation and migration and ultimately leading to hair growth. Quack et al. Shared that dermal papillae proliferated in the external root sheaths and ultimately it led to hair shaft elongation. Also, it inhibited apoptosis and prolonged the anagen phase of the hair growth. So, the cells were put more into the mitotic activity, and that led to development of more hair follicles. Wu et al. It promoted its study for hair regeneration. This is 1 month after treatment, but before we go towards exosomes in hair, we have to rule out all the genetic factors. The body should be in complete homeostasis regarding any disease or any hormones. We have to test them and then go for exosomes, and with exosomes, we do give adjuvant therapy. So this is not alone, but it does give results, and it is long lasting. It doesn't go back with if we don't proceed with another session or we stop the medicines. Next. For females, now this takes 2 to 3 sessions to come to this stage. Next. Now, cosmetic industry. Acha, cosmetic industry has basically seen a large surge in skincare products. क्यों है? क्योंकि now we all are aware, सिर्फ औरतें नहीं मर्द भी, they all are aware of their skin. अच्छा दिखना है, अपने स्किन को मेंटेन करना है, क्योंकि स्किन या फेस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी सी व्हेन वी एनकाउंटर विद समबडी. So definitely we all want our skin to look good, fresh and nice all the time. आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हैं जो मैं भी अगर इंस्टा खोलूँ या फेसबुक खोलूँ तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनको एंडोर्स कर रहे हैं, एंड आई नो उनमें से कोई भी वो यूज़ नहीं करता होगा, बट स्टिल प्रमोटिंग दैम. ठीक है, सो वी ऑल गेट इंस्पायर्ड, वी ऑल ऑर्डर ऑनलाइन एंड वी डू यूज़ दैम. तो इसमें कोई वो नहीं है कि बट एज लॉन्ग एज दे आर सेफ, इफ़ेक्टिव, उनमें इंग्रेडिएंट्स वो हो जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करें, नरिश करें, हाइड्रेट करें, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन देम, बट दे शुड बी ऑर्गेनिक, दे शुड बी नेचुरल एंड दे शुड बी क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स. आजकल क्रीम्स वगैरह, सीरम्स, मास्क, इन सब में एक्सोसोम्स, hyaluronic acid, सारी चीज़ें डाली जाती हैं. दे आर टोल्ड टू बी यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस. वो क्या करते हैं? दे अगेन टेक टुवर्ड्स द एंटी एजिंग एरिया. दे प्रमोट हीलिंग, हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन. दे बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन, ऑल्दो टॉपिकली इतना नहीं होता, लेकिन इट डज हेल्प अगर आप उसको कंटिन्यूड रखो. दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, दे प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स. जो पूरे दिन से हम थके हुए आते हैं, इतना मेकअप किया हुआ है, एवरीथिंग, उसको उन सब को रिपेयर करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए वी यूज़ इट. हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब इनमें डाले जाते हैं, विच व्हेन अप्लाइड तो इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन द स्किन. It improves elasticity and also reduces wrinkles. So I would advise whenever you guys look for any product online, डॉक्टर से मिलना तो बाद में होता है जब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है. जब भी देखें, जब भी बाय करें, मेक श्योर उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ लें, उनके परसेंटेजेस देख लें, उसके बाद प्लीज़ ऑर्डर कीजिएगा. नेक्स्ट, ये सिर्फ एक एंड है बस. दिस इज़ जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक एजिंग स्किन की, डैमेज स्किन की. और अगर हम उसे एक्सोसोम से या ये सीरम्स, मास्क, मॉइस्चराइजेशन इन सब से करें तो वो कितना अच्छा एंटी एजिंग एंड टुवर्ड्स अ यूथफुल स्किन जो हमारी बचपन में थी उसकी तरफ हमें ले जा सकता है. नेक्स्ट,
नाइस पिक्चर, राइट? जो कुछ मैंने बताया, जो कुछ बोला, it has been summarized and she looks pretty, no doubt. ठीक है? So we all can achieve, although we all are pretty in our own ways. We do not need anything. अल्लाह की creation best है, but somewhere along the road कभी कोई mishap हो, like any post acne scarring, depressions, morphia, autoimmune disorders, any skin related issue, so we can use them and give them a good look and confidence. Next, I think last. Remember these two. Thank you.